Hello everyone, my name is Nilesh Jain. I am working in Real Academy from last 22 years and I welcome you all to the extra question series of Real Academy. Our question is, in triangle ABC, segment D parallel to side AC as well, segment EF is parallel to side AB. Then we need to prove that AD upon DB into AF upon FC is equal to 1. Let us start our question. That is, see, in triangle ABC, what we are given is D parallel to AC. This is segment D parallel to segment AC. Now we all know that if in a triangle, if we have a parallel line with us, then we need to apply basic proportionality theorem. So we'll apply basic proportionality theorem in this particular question. Now our step is, in triangle ABC, सबसे पहले ट्रायंगल का नाम लिखा. नाउ D पैरेलल टू AC, that is segment DE is parallel to side AC. This is what given in question, and as line is parallel, as I told, we need to apply basic proportionality theorem. So therefore, by basic proportionality theorem, our answer will be, see in the diagram, D is parallel to AC. Then our answer will be AD upon DB is equal to CE upon EB. Let us say that this is our equation number 1. In our question, we are given with the parallel line and therefore हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई कर लिया. इन क्वेश्चन वी हैव वन मोर पैरेलल लाइन विथ अस, दैट इज EF पैरेलल टू AB. देन इन ट्रायंगल ABC, segment EF is parallel to side AB. This is what given in the question. So one more parallel line is given. As one more parallel line is given, we need to apply our theorem one more time. So therefore here EF is parallel to AB. So our answer will be AF upon FC is equal to BE अपॉन CE या फिर AB अपॉन CE. Let us say this is our equation number 2. Okay, so in our question two parallel lines are given and therefore हमने दो बार बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई कर लिया. देखो यहां पे लिखा है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. आप ये वाला रीजन ऐसे भी लिख सकते हो आगे. मतलब आप रीजन, इसके बाद रीजन लिख के फिर इक्वेशन या फिर इक्वेशन लिख के आगे उसका रीजन ऐसे भी लिख सकते हो. दोनों मेथड करेक्ट है. ठीक है. नाउ इफ यू ऑब्जर्व इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, यू विल फाइंड AD अपॉन DB जो यहां पे चाहिए इनटू AF अपॉन FC, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इनटू लेफ्ट हैंड साइड हमको दिख रहा है 2 प्रूव में. सो देयरफॉर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लिया. क्यों किया मल्टीप्लाई?
टू प्रूव में 6 ना मल्टीप्लीकेशन, तो देयरफॉर हमने उसको मल्टीप्लाई कर लिया. सो इट इज एडी अपॉन डीबी इंटू इधर का लेफ्ट हैंड साइड एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल टू इधर का राइट हैंड साइड सी अपॉन ई बी इंटू यहां पे ए बी अपॉन सी. नाउ लेफ्ट हैंड साइड कीप इट एज इट इज. वाई? बिकॉज टू प्रूव में वो चाहिए, वो अभी हमारे पास आ गया. इज इक्वल टू यहां पे चेक करेंगे तो ई बी गेट कैंसल्ड, सी गेट कैंसल्ड, इज इक्वल टू 1 विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. Hence proved. So this is our question. Okay.